Welcome to the current affairs of 8th March 2026. Which Indian pacer took 4 wickets to dismantle New Zealand and clinch India's third T20 World Cup? किस भारतीय तेज गेंदबाज ने 4 विकेटें लेकर न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और भारत का तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीता? जसप्रीत बुमराह. Which Israeli nuclear site did Tehran warn could be targeted if regime change is pursued? तेहरान ने किस इसराइली जौहरी मुकाम को निशाना बनाने की वार्निंग दी अगर हुकूमत की तब्दीली का ताक़ुब किया गया? डेमोना. Why did OpenAI's hardware leader resign following the company's deal with the Pentagon? OpenAI की पेंटागन से मुआहदे के बाद हार्डवेयर के सरबराह ने इस्तीफ़ा क्यों दिया? सर्वेलेंस ऑफ अमेरिकन एंड लीथल ऑटोनॉमी कंसर्न्स, यानी निगरानी और मुहलिक खुदकारी पर तहफ़्फ़ुज़ात. Which British royal did Canadian PM Carney support removing from succession due to deplorable behavior? कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म कार्नी ने किस बरतानवी शाही को नाकाबिल कबूल रवैये की वजह से जाननशीनी से हटाने की हिमायत की? प्रिंस एंड्रयू. प्रिंस एंड्रयू का नाम चूंकि एप्स्टीन फाइल्स में सरफेस हुआ है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात की तायीद की थी कि उसको सक्सेशन से रिमूव किया जाए और अब कनाडा के पीएम ने भी इस बात की तायीद की. How many strikes did the Israel army claim to have conducted on Iran since the start of the war? इसराइली फौज ने जंग शुरू होने से अब तक ईरान पर कितने हमलों का दावा किया? 3,400. At what rate per decade has global warming accelerated over the past 10 years? Per a recent study. एक हालिया तहकीक के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों में फ़ी दिहाई ग्लोबल वार्मिंग की शरह क्या रही है? 0.35 डिग्री सेल्सियस. Why had Russia been banned from the 2018 Paralympics before winning medals again after 12 years? रूस को 2018 पैरालंपिक्स से क्यों पाबंदी लगाई गई थी, जिसके 12 साल बाद उन्होंने दोबारा तमगे जीते अभी जो पैरालंपिक्स शुरू हुए उसमें? डोपिंग स्कैंडल, क्योंकि उस वक्त रूस के खिलाड़ियों पर डोपिंग का इल्ज़ाम लगाया गया था. What is the US pressing Sri Lanka to do regarding crew and survivors from a sunken Iranian ship? डूबे हुए ईरानी जहाज़ के अमले और जिंदा बचने वालों के बारे में अमेरिका श्रीलंका पर क्या दबाव डाल रहा है? Not to repatriate the crew, यानी अमले को वापस ना भेजे. Which UAE carriers led the cautious resumption of flights as Dubai's airports reopened amid regional tensions? इलाकाई तनाव के दौरान दुबई के हवाई अड्डों के खुलने पर कौन सी अमारती एयरलाइंस परवाज़ें बहाल करने में आगे रहे? Emirates, Etihad and Fly Dubai. What did the US bypass to approve a $155 million munitions package fast-tracking 12,000 बम bodies to Israel? अमेरिका ने इसराइल को 12,000 बम फराहम करने के $152 मिलियन पैकेज की मंजूरी के लिए क्या नज़रअंदाज किया? Congressional review. Which Pakistani national was found guilty of an Iran-linked plot and allegedly sought to hire a hitman in the US? कौन सा पाकिस्तानी शहरी ईरान से मुंसलिक साजिश में कसूरवार पाया गया और अमेरिका में मुबैना तौर पर कातिल किराए पर लेना चाहता था? आसिफ रजा मर्चेंट. How many people were killed in Iran's rare helicopter raid deep into Lebanon's Bekaa Valley? इसराइल के लबनान की बका वादी में नादर हेलीकॉप्टर चापे में कितने अफराद हलाक हुए? 41. What did PM Shehbaz Sharif announced amid a global fuel crisis, calling for its burden to be borne judiciously? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी ईंधन बहरान के दौरान क्या ऐलान किया और इसका बोझ अक्लमंदी से उठाने की अपील की? ऑस्टेरिटी प्लान, यानी किफ़ायत शारी का मंसूबा. How was a Gwadar fisherman killed in Iranian waters according to the Gwadar DC? गवादर के डीसी के मुताबिक ईरान की आबी हदूद में एक गवादरी माहीगीर कैसे हलाक हुआ? डिब्रिस फ्राम एन इसराइली प्रोजेक्टाइल इंटरसेप्टेड बाय ईरानियन एयर डिफेंस, यानी ईरानी दिफा से रोके गए इसराइली प्रोजेक्टाइल के मलबे की वजह से.
Under which legal section were Aurat March activists detained in Islamabad ahead of International Women's Day? عالمی یوم خواتین سے قبل اسلام آباد میں عورت مارچ کارکنوں کو کس قانونی دفعہ کے تحت حراست میں لیا گیا؟ سیکشن 144. How many terrorists did ISPR report killed in 5 intelligence-driven operations across Khyber Pakhtunkhwa? ISPR نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں 5 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں کتنے دہشت گرد ہلاک ہوئے؟ 13. How was the second Pakistani killed in the UAE, prompting PM Shahbaz to express grief? متحدہ عرب امارات میں دوسرے پاکستانی کی ہلاکت کس طرح ہوئی جس پر وزیر اعظم شہباز نے افسوس کا اظہار کیا؟ Falling debris from an aerial interception in Dubai's Al Barsha. دبئی کے Al Barsha میں ایریل انٹرسیپشن کی وجہ سے جو ڈیبریز گری تو وہ اس پہ گری اور اسی وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ What new vehicle insurance requirement has Sindh made mandatory with SECP hoping other provinces will follow? سندھ نے کون سی گاڑی بیمہ ضرورت لازمی قرار دی ہے جس پر SECP کو امید ہے کہ دیگر صوبے بھی عمل کریں گے؟ Third party vehicle insurance. How many rape cases were recorded in KP last year and how many resulted in a conviction? خیبر پختونخوا میں گزشتہ ایک سال میں کتنے ریپ کیسز درج ہوئے اور کتنی سزائیں ہوئی؟ 258 کیسز جس میں صرف ایک کو کنوکشن یعنی سزا ہوئی۔ What did the Lahore High Court direct the government regarding the Murree Brewery ruins? لاہور ہائی کورٹ نے مری بریوری کے آثار کے بارے میں حکومت کو کیا ہدایت دی؟ پریزرو the ruins یعنی آثار کو محفوظ کرے۔ How many protesters did police tell the JIT had reached the US consulate in Karachi without Hayaf's consent? پولیس نے JIT کو بتایا کہ بغیر اعلیٰ افسران کی رضامندی کے کتنے مظاہرین کراچی میں امریکی قونصل خانے تک پہنچے؟ Around 300. What tax obligation has been imposed on laboratories and diagnostic centers in بلوچستان؟ بلوچستان میں لیبارٹریوں اور تشخیصی مراکز پر کون سی ٹیکس ذمہ داری عائد کی گئی ہے؟ 2% sales tax. Who rejected the Balochistan government's plan for creating new districts? بلوچستان حکومت کے نئے اضلاع بنانے کے منصوبے کو کس نے مسترد کیا؟ Opposition leaders and tribal elders. What legal question will the Supreme Court settle in the BR case against the Shariat Court's wedlock policy ruling? if بہار کی شریعت کورٹ کے wedlock policy فیصلے کے خلاف اپیل میں سپریم کورٹ کیا قانونی سوال طے کرے گی؟ Whether a civil servant can claim indefinite posting at one station. یعنی یہ طے کرے گی کہ کیا ایک سیول سرونٹ ایک اسٹیشن پر لامحدود تعیناتی کر سکتا ہے کہ نہیں، ویڈلاک پالیسی کے تحت۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، اسٹے بلیسڈ۔